Okay, so let us start with the MCQs from motion in plane. Yes. I hope you can see the MCQ. Yeah. So just read this first question. A particle moves on a linear path and its displacement at time t is given by x is equal to 0.2 plus 0.3 t plus 0.4 t square meter, so that its acceleration is. So what will be the acceleration of this particle? You have to find out. So see here, whenever the displacement is given, तो displacement का जो equation है तो वो दिया गया है यहाँ पे, which is like x is equal to 0.2 plus 0.3 into t plus 0.4 into t square. तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और हमने कल ही देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कौन होता है? वेलोसिटी होता है. तो उसके लिए हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. So just let us differentiate this equation with respect to time. So d by dt of x we will have to find out. तो देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो मतलब d by dt जोड़ दिया. हर एक टर्म को हमको d by dt जोड़ना है. तो जैसे हम ये करेंगे तो हमको मिलेगा 0.2 प्लस 0.3 t प्लस 0.4 t स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है, जो कि अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डेरिवेटिव ऑफ 0.2 हैज टू बी फाउंड आउट सेपरेटली प्लस डेरिवेटिव ऑफ 0.3 into t square has to be found out separately plus derivative of 0.4 into t square has to be found out separately. So if you find out all these three terms, तो सबसे पहला जो है ये वाला टर्म, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? 0, बिकॉज इट्स कांस्टेंट. कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस ये जो दूसरा टर्म है तो उसमें क्या आएगा? देखो ठीक से, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं है ना, टी है सिर्फ. ओके, सो वी हैव दैट 0.3 into t. उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? उसमें तो हम जानते हैं यहाँ पे 0.3 is going to be a constant, so it can be taken out, and t का डेरिवेटिव क्या बनता है? 1. okay, plus here it is again 0.4 is going to be a constant, so it can be taken out. But what is the derivative of t square with respect to t? It is simply 2t, and hence we can get this simplified as 0.3 plus 2 times of 0.4 into t, मतलब कितना हो गया वो? 0.8 into t हो गया. ठीक है, but this is going to be actually the velocity because it is nothing but the rate of change of displacement. dx by dt उसको हम बोल सकते हैं, and dx by dt मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी होता है, तो इसलिए ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया. चलो ठीक है, बट अभी इससे भी आगे जाके we want to find out the acceleration also. Here see the question carefully. What we want here is we want to find out the acceleration, right? तो acceleration निकालने के लिए इसका फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे. So if we differentiate this with respect to time once again, so d by dt of v, which is equal to d by dt of 0.3 plus 0.8 t. okay, जिसमें अभी देखो 0.3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 plus 0.8 is a constant, can be taken out, and what is the derivative of t here? It is 1, correct? So that we can get this as 0.8 only. So this will be the acceleration actually. तो क्योंकि वो dv by dt बनता है, right? And dv by dt मतलब ही क्या होता है? Acceleration होता है, इसलिए हमको ये मिल जाएगा. Acceleration of this particle is actually going to be 0.8 meter per second square, which is already there. Okay, in the option number D here. Yes. Let us see this question number 2 here.
The velocity of particle is given by v bar, which is equal to velocity of the particle is given as v bar is equal to t square into I bar minus 3t into j bar. That is going to be in meter per second. Okay. So what is the acceleration at time t equal to 3 seconds? How we can get it? So देखो acceleration निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? डेरिवेटिव निकालना होता है. Velocity को हमको differentiate करना होगा एक बार, so that we can get this as d by dt of t square into I bar minus d by dt of 3t into j bar. Okay. Yes. Very good. So here we can get it as अभी देखो t square का डेरिवेटिव क्या बनता है हमको पता है already 2t into I bar as it is minus 3 is a constant out and t का डेरिवेटिव 1 into j bar as it is, and this is going to be the acceleration in general at any instant of time. But here as we know that this acceleration is to be found out at time t equal to 3 seconds, right? तो जबकि 3 seconds पे मतलब 3 seconds पे हमको टाइम इंटरवल पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t equal to 3 here in this this equation, so that we get this a bar is actually equal to 2 times of 3 into I bar minus 3 into 1 is going to be simply 3 only into j bar. उसमें तो t है ही नहीं ना डालने के लिए, तो इसलिए वो बन जाएगा सीधा acceleration is equal to 6 times of I bar minus 3 times of j bar, and that's it. So this is actually going to be the final answer, which is already there in this option number B here. Okay. So in this way, we can get the acceleration from the velocity. Okay. अब देखो यहाँ पे in the figure VT graph is already shown. So AT graph will be, तो हमको VT ग्राफ दिया हुआ है और AT ग्राफ ढूंढ के निकालना है. How we can get that? See here, the VT ग्राफ, velocity और time, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है तो वो कुछ इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है. यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर जा इस तरह से आ रहा है. ठीक है. अभी होता ऐसा है ना कि A और T के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, ये निकालने के लिए हमको इसमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि वेलोसिटी और टाइम इसके बीच में जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप माना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. या तो ठीक से द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. ओके. तो अभी यहाँ पे देखो, अगर ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग ग्राफ तो है, इतना तो पता चल रहा है कि नहीं. दिस फर्स्ट ग्राफ हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर इट इज डिक्रीजिंग, and since it is decreasing the acceleration will be negative. Okay. तो acceleration जो है वो वहाँ पे negative रहेगा. Suppose this is the graph we want here. Okay. So if we just mark this point here and project it here in this graph here, then we can say that so far as the velocity is decreasing here, यहाँ पे velocity क्या कर रहा है, देखो ठीक से decrease हो रहा है कि नहीं इस तरह से. तो जब तक वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रहा है तो तब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा और वो भी कांस्टेंट रहेगा. तो इसलिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेलरेशन का नेगेटिव कांस्टेंट. ओके. लेकिन कब तक, जब तक ये पॉइंट नहीं पहुंच जाए. इस पॉइंट के बाद क्या होगा, देखो ठीक से, इस पॉइंट के बाद आफ्टर दिस पॉइंट द ग्राफ इज इंक्रीजिंग and linearly increasing. That means the velocity here in this case is going to be directly proportional to the, देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है. तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dv by dt जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये टाइम का डेरिवेटिव तो 1 बन जाए, टाइम का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा और जो कांस्टेंट है तो दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी दैट कांस्टेंट ओनली. तो इसलिए वहां पे वो कांस्टेंट आ जाएगा, dv by dt विल बी अ कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस dv by dt मतलब ही एक्सेलरेशन जो है तो वो एक्चुअली कांस्टेंट बन जाएगा. बट इट इज पॉजिटिव. रिमेंबर, व्हाई इज इट पॉजिटिव? Because the velocity is increasing with respect to time here in this graph here. तो यहाँ से यहाँ तक velocity बढ़ता जा रहा है और वो भी linearly बढ़ रहा है.
करके यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो है तो वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो देखो इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। देखो ठीक से, वेयर इज दिस टाइप ऑफ ऑप्शन, जस्ट चेक हियर, इट इज देयर इन दिस ऑप्शन बी हियर। ओके, तो बी ऑप्शन जो है तो वही हमको यहाँ पे दिख रहा है इसके सिमिलर, बाकी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद द पोजीशन वेक्टर r bar इन 10 सेकेंड्स। देखो इधर 10 सेकेंड्स में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। और उसका जो पोजीशन वेक्टर है तो वो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इन जनरल। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो पोजीशन वेक्टर है तो वो हमको मिल रहा है r bar इज इक्वल टू टी 3t स्क्वायर i bar plus 4t square into j bar plus 7 times of k bar. Okay, so we want to find out the displacement in 10 seconds. Okay, so suppose that this particle, where is it present at origin, मतलब at time t equal to 0, तो वो हमको पहले ढूंढ के निकालना पड़ेगा। देखो ठीक से, first of all we'll have to find out where the particle is present at time t equal to 0. Suppose it is the point a here, तो a पे अगर वो प्रेजेंट है तो उसका हमको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। a r1 बार उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, r1 बार। ओके, एंड व्हेन टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो टाइम 10 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा तो वो भी हमको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो सपोज इट इज एट द पॉइंट b हियर, तो यहाँ पे b पे वो चला जाता है, तो उस b का भी पोजीशन वेक्टर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे r2 बार। ओके, दिस इज r2 बार हियर, and then we'll have to find out this displacement vector which is joining this a bar and a point and b point, which will be denoted by ab bar, and this ab bar will actually be equal to r2 bar minus r1 bar. Why? Because अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे यहाँ पे तो हम देख सकते हैं आराम से कि r1 बार प्लस ab बार is actually going to be r2 bar, so that we can get that ab bar is equal to r2 bar minus r1 bar. And what is this ab bar? That is only the displacement vector which is delta r bar, जो कि हमने कल भी देखा था, याद है ना। तो अभी यहाँ पे डेल्टा आर बार मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको r1 बार और r2 बार चाहिए। तो r1 बार निकालने के लिए for r1 bar put t equal to 0 in this equation. So if you put this t equal to 0 here, then we get r1 bar which is equal to 3 into 0 का square into I bar plus 4 into 0 का square into j bar. अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर ही है क्या, चेक करो एक बार। अच्छा ठीक है, okay, actually there is a correction, it is 3t cube. okay, ये जो यहाँ पे यस याद रखो ठीक से, यहाँ पे 3t क्यूब है, इट्स अ करेक्शन। ओके, तो 3t क्यूब इंटू आई बार प्लस 4t स्क्वायर इंटू जे बार प्लस 7 टाइम्स ऑफ के बार। ओके चलो ठीक है, फिर भी वैसे भी यहाँ पे r1 बार के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब हो या स्क्वायर हो उससे। यस, प्लस 7 टाइम्स ऑफ के बार। सो व्हाट इज r1 bar we are going to get here? It is 0 I bar plus 0 j bar plus 7 k bar. So write it as 7 k bar only. 0 I bar plus 0 j bar नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। चलो ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, और अभी फॉर r2 bar, in order to find out r2 bar, you have to put t equal to 10 seconds here in the same equation, so that we get this r2 bar which is going to be equal to 3 times of 10 cube
plus 4 times of 10 square into j bar plus 7 times of k bar. Yes, which is going to be actually R2 bar is equal to 3000 into I bar plus 400 into j bar plus 7 times of k bar. Okay, so now in order to find out delta R bar, what we have to do is R2 bar minus R1 bar. We have to work it out. So just subtract this 3000 I bar minus यहाँ पे R1 बार के अंदर I बार है क्या? नहीं, तो 0 है, तो इसलिए वहां पे वो 3000 I बार ही रहेगा, नो डाउट, प्लस 400 J बार माइनस यहाँ पे J बार नहीं है, तो इसलिए वो सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? सिंपली 400 J बार ही आएगा, और फिर 7 K बार माइनस 7 K बार just forms out to be 0, so that's why 0 K bar will be there in the delta R bar. So delta R bar will contain 3000 I bar plus 400 J bar plus 0 K bar. So just check. Okay, maybe that then it's not a correction actually. वैसा correction नहीं था वो, तो actually it was square only. तो यहाँ पे square होने से फिर क्या होगा देखो, यहाँ पे 300 ही आएगा सिर्फ. ओके, तो 3t स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर ही करेक्ट करना पड़ेगा. तो स्क्वायर करने से वो क्या बनेगा एक्चुअली 300 बनेगा. ठीक है, तो 300 प्लस 400 J बार, नॉट 3000 but 300, तो 300 I bar plus 400 J bar, this will be the answer actually, which is going to be there in this option number C here. Okay, 300 I bar plus 400 J bar. Okay, let us try this sixth one. The position of the particle described by the equation R bar is equal to 3t cube plus 4t square minus 9k bar. Find out its velocity at time t equal to 1 second. Okay, तो 1 second पे उसका velocity कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. See how we'll get it. तो R bar जो दिया हुआ है, देखो ठीक से, R bar is given here, that is 3t cube I bar plus 4t square into J bar minus 9 times of K bar. So velocity कैसे निकालते हैं? Velocity is nothing but the rate of change of displacement. So that means we will have to find out the derivative of this displacement vector. मतलब ये R bar का derivative हमको निकालना पड़ेगा, which is actually going to be dy dt of 3t cube into I bar plus 4t square into J bar minus 9k bar. Okay, जिसमें से अभी 3 is a constant, so it can be taken out, and the derivative of t cube is to be found out in the next step, plus 4 is again a constant, so it can be taken out, and t square will be left inside into J bar minus 0, because 9k is a complete constant. 9k bar जो है वो पूरा ही constant है, उसके अंदर t है ही नहीं, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 0. Okay, this is going to become v bar here. So v bar is actually going to become 3 times of, यहाँ पे 3 t cube का डेरिवेटिव क्या आएगा 3t square. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x raised to n का डेरिवेटिव होता है n times x raised to n minus 1 प्लस 4 times of t square का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, and hence it will become v bar, which is equal to 3 3s are 9, so it will be 9t square into I bar plus 8t into J bar. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वेलोसिटी. चलो ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन तो हमको मिल गया, नो डाउट, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट t इक्वल टू 1 हियर, देन व्हाट वी हैव टू डू. तो t इक्वल टू 1 पे हमको वेलोसिटी कैसे मिलेगा, देखो ठीक से, t इक्वल टू 1 यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, पुट t इक्वल टू 1 एंड गेट v bar इज इक्वल टू, अभी 9 into 1 स्क्वायर क्या बनता है 9 ही बनता है,
तो इसलिए वो आएगा 9 I bar plus 8 into 1 again 8 into J bar. That's all. So this is actually going to be the value of velocity, okay, which is already there in the option number 9 I bar plus 8 J bar, that is A here. तो A option में वो है, ठीक है. These are the questions from vectors actually, which already we have completed recently. So we'll not go into that. And this we have already done it last time. कल के लेक्चर में हमने ये किया था, याद होगा आपको. Okay. Let us try this also. 20-second one. See here, the motor car is moving northwards with a velocity 30 meter per second. If it turns towards west with the same speed, then it change in its velocity is. So see here, the motor car is moving towards the north with the velocity 30 meter per second. So its velocity can be represented by a vector which is of magnitude 30, and since it is along the y-axis, it will be accompanied by J bar, okay. And now after that it turns towards west, ठीक है. तो वेस्ट में जब वो टर्न होता है, तो वेस्ट मतलब किस तरफ होता है, देखो, इट टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है तो वो इस तरफ होगा जरूर. एंड इट्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ओके, सेम स्पीड उसका है, बट सिर्फ वो डायरेक्शन उसका चेंज हो गया. तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 30, उसका मैग्नीट्यूड तो 30 है, but since it is in the negative direction of x-axis, it will be minus sign will appear here, and since it is along the x-axis, I bar will appear here. I bar के डायरेक्शन में है वो, इसलिए यहाँ पे I bar आ जाएगा. So we can call this as v1 bar, which is the initial velocity, and this can be called as the v2 bar, which is going to be the final velocity. And since we want to find out the change in its velocity, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी बार वी वांट टू फाइंड आउट. तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो इफ वी जस्ट वर्क दिस आउट, देन वी कैन गेट दिस फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी minus 30 I bar, right? So this is minus 30 I bar, and initial velocity which is going to be 30 J bar, so minus 30 J bar. This is actually going to be the change in velocity. That's all. Let us check. Yes, see the diagram here. This is your V2 बार जो है तो वो तो हमने वैसे ही रखा, but since we want to subtract V1 bar from it, we have to reverse its direction. V1 बार का डायरेक्शन हमको रिवर्स करना पड़ेगा और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा. तो इसलिए ये जो वेक्टर हमको मिलता है, what is vector is in direction is with, कौन सी डायरेक्शन में ये वेक्टर है, तो हम समझ सकते हैं आराम से. If you plot this vector carefully on the graph paper, ये जो minus 30 I bar plus minus 30 J bar जो वेक्टर है, उसको अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो तो देखो कैसे दिखेगा वो. सपोज दिस इज द ग्राफ पेपर. सो minus 30 I bar minus 30 J bar मतलब कहाँ पे आएगा वो, minus 30 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनेगा कि नहीं वो. तो इसलिए यहाँ पे minus 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो पॉइंट. So this is the point where minus 30 will be located. And if we join this point here with the origin, then this vector will be our change in velocity vector, that is delta V bar here. So in this way, we can get the vector delta V bar. But what is its magnitude here? तो magnitude निकालने के लिए delta V bar का magnitude can be found out to be simply root of minus 30 का whole square plus minus 30 का whole square again. So that we can get this as root of 30 का whole square होता है 900, right? Plus here it is again 900.
So 900 plus 900 becomes 1800, which is going to be 900 times 2, right? And since we know that 900 का square root होता है 30, so we can get this as 30 root 2. This is going to be the change in velocity in meter per second. And what is it in direction in? तो कौन सी डायरेक्शन में है वो? ये देखो, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा. तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया वो? वेस्ट और साउथ के बीच में जो आ गया ना, तो वेस्ट साउथ के बीच में मतलब क्या हो गया वो? साउथ वेस्ट. Yes, so its magnitude is going to be 30 root 2 meter per second, and it is going to be in the direction of southwest, no doubt. So this is will be the correct answer. Okay. Let us try this 23rd one here. The velocity of the boat with respect to ground is 3I bar plus 4J bar. Okay. And the velocity of water with respect to ground is minus 3I bar minus 4J bar. Then what is the velocity of boat with respect to water? Okay, see here, this is the question of relative velocity. Actually, जब हम with respect to ये word आता है, तो उसमें समझ जाना है हमको कि it is the question of relative velocity. So see here, velocity of boat with respect to ground, that means absolute velocity of boat. We can denote it by VB here, VB bar, which is actually going to be 3I bar plus 4J bar. Okay. And the velocity of water with respect to ground, मतलब absolute velocity of water, that means VW bar उसको हम बोल सकते हैं. Okay, VW bar, which is actually minus of 3I bar minus of 4J bar. Okay, but what we want here is the velocity of boat with respect to water, means we want to find out the velocity of boat with respect to water. So it is the relative velocity of boat with respect to water, which can be obtained by subtracting the velocity of water from velocity of boat. That means VV bar minus VW bar. This is the formula for relative velocity. So if we just put the values here, then we get this 3I bar plus 4J bar minus VW bar. देखो कितना है? So it is going to be minus of 3I bar minus of 4J bar, and hence we can get this simplified as 3I bar plus 4J bar minus of minus plus 3I bar plus 4J bar, which happens to be actually 6I bar plus 8J bar, which is going to be the option C here. Okay. See here, we can also solve this conceptually. ये हम orally भी solve कर सकते हैं. देखो कैसे. If we plot these two velocities on the graph paper, तो graph paper पे कैसे दिखेंगे ये values? देखो. Suppose this is x-axis, this is y-axis. So where this vector is located? 3I bar plus 4J bar. It is located like this. 3I bar plus 4J bar. Correct है? इसको हम बोलेंगे VB bar. Okay. And here another vector VW bar, which is going to be minus 3I bar minus 4J bar. Where it is located? It is located in the third quadrant here, and it will be exactly opposite to this, right? So we can call it as VW bar. Okay. Now, if you want to find out the relative velocity, that is VBW bar, तो हमने already देखा है कि relative velocity of the one object with respect to another object, whenever these two objects are traveling in the opposite directions, are always equal to the sum of the two. Correct है? दोनों के sum के बराबर वो होता है. तो इसलिए यहाँ पे इसका जो velocity है वो 3I bar plus 4J bar है, और इसका जो velocity है वो minus 3I bar minus 4J bar के बराबर है. तो इसलिए फिर इसको अगर निगेटिव करेंगे तो वो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अंदर जब वो ऐड होगा तो एडिशन कितना आएगा? सिंपली 6I bar plus 8J bar के बराबर बन जाएगा. So again we are going to get the same answer here in this way. चलो 24th one, just check it out. Sorry. Yes, read this question number 24 here. The in a projectile motion, y is given to be 8t minus 5t square, and x is going to be 6t only. Then the initial velocity of the projectile is, I think already we have done this question last time. If you remember, what we have to do here is simply
क्या करना है इसमें हमको, जबकि y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर लिखा हुआ है और x इज इक्वल टू 6t है, तो dy बाई dt कितना आएगा बताओ। dy बाई dt मतलब इसका डेरिवेटिव जो बनेगा 8 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2t विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 8 माइनस 10t, करेक्ट है। दिस इज द vy which is called as the vertical or y component of velocity, and here x component of velocity can be obtained by differentiating this x with respect to time, which is 6 only, which we can call it as vx here, which is 6. But if you want to find out the initial velocity here, so for initial velocity what we have to do is we have to put t equal to 0 here. तो t equal to 0 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, uy मिल जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ पे t equal to 0 डालने से vy के बदले क्या मिलेगा हमको, uy, which can be called as 8 minus 10 times of 0, which is going to be 8 only, and at the same time vx is going to be 6. तो t equal to 0 डालो या ना डालो तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसका कांस्टेंट ही है, उसको हम ux बोल सकते हैं, it is going to be 6, and then we'll be able to find out the initial velocity of the particle u, which is going to be root of ux square plus uy square, where ux is going to be 8 and uy is going, sorry, ux is going to be 6 and uy is going to be 8. So if you put these values here, then we get this 6 square plus 8 square, which is going to be 36 plus 64, which is 100, and root of 100 is going to be 10, which is there in option number C here. Okay, yes, the next one, 25th one, velocity time graph of two objects A and B is shown in the figure, then the ratio of acceleration of A to the acceleration of B is, yes, how will you get the ratio of accelerations? You have to understand here that whenever we have the graph between velocity and time, the slope of this graph happens to be the acceleration. Okay, अभी हमने एक सम किया था इसके ऊपर बेस्ड, याद है? तो slope of VT graph is nothing but acceleration. ये अभी अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। तो अगर ये बात यूज करेंगे तो देखो फर्स्ट ग्राफ जो है ए ग्राफ है उसका एंगल कितना बना हुआ है, 45 डिग्री बना हुआ है, और दूसरा जो ग्राफ है बी उसका एंगल एक्चुअली 60 डिग्री बना हुआ है, करेक्ट है। तो अभी अगर हम ये दोनों ग्राफ्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो फिर उनका स्लोप निकालना हमको इजी होगा। देखो ठीक से, द फर्स्ट ग्राफ हियर is going to be inclined at an angle 45 degree with the x-axis. Okay, so what is the slope of that graph? So we can call it as the acceleration of the particle A, which is going to be tan 45. ये तुमको पता है ना स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप का और एक फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये मैथ्स में जिन्होंने स्ट्रेट लाइन स्टडी किया है तो उनको पता होगा जरूर, tan theta is the formula for slope, so we have to use it here. So we get this tan 45 which is going to be actually 1, okay, and that is the acceleration of A here. And what about the acceleration of B? So acceleration of point B here will be actually tan of that angle. अभी देखो यहाँ पे ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। So if we draw it here, then we know that B का जो ग्राफ बनता है उसका एंगल 60 डिग्री है, तो इसलिए वही फॉर्मूला फिर से हम यूज करेंगे यहाँ पे tan थीटा वाला। तो यहाँ पे tan 60 आ जाएगा, और tan 60 हमको पता है ऑलरेडी, इट इज √3. सो सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ A इज 1 and the acceleration of B is √3, so ratio of accelerations of A and B is going to be 1 upon √3, which is already there in option number C, A here. Okay, let us see the next question here, 26th one. A body of mass 5 kilogram moves with the velocity yes, the body of mass 5 kilogram moves with the velocity v bar, which is given to be 30 I bar plus 40 J bar. Okay, from origin. Okay, it is present at origin initially. Okay, a constant force of
-6 I bar minus 5 J bar न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। ओके, उसके ऊपर जो है वो -6 I bar minus 5 J bar इतना फोर्स काम करता है। ओके, सो एट व्हाट टाइम its y component of velocity will be, तो देखो यहाँ पे at what time its y component of velocity will be 0। okay, so we want to find out the time at which the y component of velocity will be 0। चलो ठीक है, so how can we find it out? See here, velocity is given here, initial velocity ये दिया हुआ है हमको, और वो origin से start करता है, ये भी दिया हुआ है, और उसका मास भी दिया हुआ है, और फोर्स भी दिया हुआ है उसके ऊपर काम करने वाला। एंड वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम एट विच इट्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0। मतलब हमको दिया हुआ क्या है यहाँ पे, vy इज गोइंग टू बी 0 हियर, तो vy जो है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। यस, दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियल वेलोसिटी, एक्चुअली वी कैन कॉल इट एज u बार। ओके, u बार मिल गया, चलो ठीक है। अभी फोर्स दिया हुआ है, ओके, फोर्स उसको हम बोल देंगे F बार, चलेगा ना, F बार which is going to be -6 I bar minus 5 J bar, right? And mass is going to be, mass of the body is going to be 5 kilogram, right? So do you know that this acceleration is actually the force divided by the mass, because force is equal to mass into acceleration, which is the Newton's second law of motion, it tells us that। so अगर force equal to mass into acceleration है, तो इसका मतलब acceleration equal to क्या हो गया, force upon mass हो गया। तो force is nothing but -6 I bar minus 5 J bar, right? And if we divide it by mass, then it becomes 5। so this is actually going to be the acceleration। okay, acceleration हमको मिल गया, but acceleration का use क्या है? देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, और हमको ये बताया है कि y component of the velocity is going to be 0 and we have to find out the time। so it indicates that we have to use the first kinematical equation here in the two-dimensional motion or in planar motion, which is like v bar is equal to u bar plus a bar into t, correct है? so v bar can be expressed as vx into I bar plus vy into j bar as the two components। okay, and u bar is already given here, see here, this is your u bar। so if you replace it by that, we get this as 30 into I bar plus 40 into j bar। okay, plus acceleration, see this acceleration here, this is to be replaced here, and that is to be multiplied by time, which is to be found out। okay, so we are going to get this as acceleration, which is minus of 6 I bar minus 5 J bar upon 5, and that is multiplied with time। okay, now just we have to simplify this equation further। इस इक्वेशन को हमको आगे सॉल्व करना है। Yes, see how we can do that। so basically Vx I bar plus Vy J bar, kept as it is, plus here it is 30 I bar plus 40 J bar separated, and this minus sign, it already, this 5 can be distributed for both of the terms here in this side, so we get this minus of, ये t को भी distribute करो, तो minus of 6 upon 5 into t into I bar, and here it is minus of 5 upon 5 t into j bar। ये स्टेप समझा क्या सबको? ठीक से चेक करो एक बार। ये हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, t को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों तरफ, इवन इस 5 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों टर्म्स के लिए न्यूमरेटर के अंदर जो है। या अगर आपको नहीं समझा है तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एक स्टेप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा करते हैं। ये कैसे आया वो मैं तुमको सेपरेट समझाता हूँ। यहाँ पे अगर करेंगे ठीक से तो देखो, माइनस ऑफ 6 I bar minus of 5 J bar upon 5
इंटू टी, ऐसा ही है ना वो। तो इसको हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये 5 को सेपरेट करना होगा। देखो तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 6/5 इंटू आई बार, करेक्ट, माइनस ऑफ 5/5 इंटू जे बार। टी को अभी तक हमने बाहर ही रखा है, टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अभी टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या बनेगा देखो, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 6/5 इंटू टी इंटू आई बार, माइनस ऑफ 5/5 इंटू टी अगेन इंटू जे बार, which is already here. Check. So we have just solved this in this way. Okay. Abhi, now we can just cancel this 5 from both numerator as well as denominator and get 1 left here. So that we can just get the next equation as Vx into I bar plus Vy into J bar, which is equal to 30 I bar plus, अच्छा ये ऐसा करेंगे, ये I bar वाला जो टर्म है वो उसके साथ मिक्स कर देंगे यहाँ पे, तो 30 I bar माइनस 6/5 इंटू टी इंटू आई बार, ये एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो है 40 जे बार और ये जो टर्म है वो हम एक इकट्ठा करेंगे दूसरे ब्रैकेट के अंदर, तो वहां पे हमको मिल जाएगा 40 जे बार एंड हियर इट इज माइनस ऑफ टी जे बार सिंपली। ओके, तो ये हमने सेकेंड ब्रैकेट में रखा। ओके, अभी अगर हमने इक्वेट किया, क्योंकि इसमें देखो Vx इंटू आई बार as it is plus Vy into J bar as it is, okay, which is going to be equal to, अब यहाँ पे इसमें से ना I bar कॉमन निकालो, तो देखो अंदर में क्या बचेगा 30 माइनस 6t/5 इंटू आई बार कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी J bar कॉमन निकालो दोनों टर्म्स में से, तो बचेगा 40 माइनस t एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद J bar। इससे हमको दो इक्वेशंस मिलते हैं। इफ यू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई बार on both the sides and J bar also on both the sides, then we get two equations, that is Vx is actually going to be 30 minus 6t/5। ओके, ये हमारा आई बार का कोएफिशिएंट इक्वेट करने से हमको मिल गया, और जे बार का कोएफिशिएंट इक्वेट करने से हमको मिलेगा Vy is equal to 40 minus t। check, but just recall here in the question what we want here is we want to find out the at what time the y component of velocity becomes 0। okay, velocity y component of velocity becomes 0, that means we want to find out the time when Vy becomes 0। okay, y component of velocity मतलब क्या, Vy is going to be 0, तो उसके लिए टाइम कितना है वो हमको ढूंढ के निकालना है। So just put this Vy equal to 0 here in this equation। ये इक्वेशन के अंदर Vy के बदले 0 डाल दो, तो इससे हमको मिलेगा 0 is equal to 40 minus t, so that we get this t is equal to 40 seconds। that is simply the answer। 40 seconds पे वो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 बनेगा, याद रखो ठीक से। एंड इवन इससे भी आगे जाके हम इसको यूज करके ना इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है 0 बनता है वहां पे, तो हमको मिल गया। उसी समय उसी इंस्टेंट पे एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा वो भी हम निकाल के दिखा सकते हैं। व्हाट विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दैट टाइम, वी कैन फाइंड आउट दैट बाय पुटिंग t equal to 40 here and get it as 30 minus 6/5 into 40, which is going to be Vx is equal to 30 minus 5 8s are, so ये 5 8s are 40 and 8 6s are 48, right? So it's going to be Vx is equal to minus of 18, sorry, minus of 10, sorry, minus of 18 बराबर है। Vx will be actually minus of 18 meter per seconds। okay, so चलो ठीक है। Yes, see this 27th one here. The displacement of a particle under the effect of a constant force is related with time by the formula t is equal to root of x plus 3, where x is in meter and t is in seconds। okay, what will be the displacement of the particle when its velocity is 0। okay, तो देखो हमको निकालना क्या है, what will be the displacement of the particle
when its velocity is 0. ठीक है, तो देखो यहाँ पे t is equal to root of x plus 3. अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका 3 जो है वो इस तरफ लेके जाना है. Take this 3 in that side so as to get this as t minus 3 is equal to root x, right? So that we get this root x is equal to t minus 3, and hence we get this x is equal to actually t minus 3 का whole square, correct है? And which can be also written as t square minus 6t plus 9. If you open this bracket by the formula for a plus b the whole square, a minus b the whole square, then we get this. And here we can find out the velocity just by differentiating this. So what is the derivative of this? 2t t square का derivative बनता है 2t, and minus 6t का derivative बनता है minus 6. That's it. So this is the velocity. And what is the acceleration? You can find out the acceleration. नहीं बेटा, लेकिन acceleration के बारे में कुछ बोला ही नहीं ना. Okay, तो ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, देखो कि we want to find out the displacement of the particle when its velocity is going to be 0. Yes, तो velocity 0 कभी बनेगा, वो कैसे हमको पता चलेगा? Equate this velocity with 0 and get this as 2t minus 6 equal to 0, which means 2t must be equal to 6, which means t must be equal to 3. करेक्ट है? तो t equal to 3 seconds पे क्या हो रहा है, velocity 0 बन रहा है. तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो कैसे हमको मिलेगा? इस इक्वेशन से मिलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट है. देखो, सो पुट दिस t equal to 3 here in equation number 1. This is suppose equation number 1. So we can get that x is equal to 3 minus 3 the whole square, which is actually going to be x is equal to 0 का whole square, मतलब ही x equal to 0. तो मतलब displacement is going to be 0 when the velocity of the particle is going to be 0. Okay, चलो ठीक है. अब ये बाकी जो क्वेश्चंस है वो तुम कर सकते हो आराम से. Just do it yourself, and if you have some doubts then we can discuss later in the next lecture. Okay, so just we'll stop here for today. Okay, thank you all of you.